Dear student, this is Dr. Alok Shivamurthy Tripathi going to teach you the topic pathophysiology of inflammation. Today we are going to see about the topic that inflammation, types, acute inflammation, chemical mediators of inflammation and chronic inflammation. हम इस पूरे सीरीज में ये सारी चीजों को देखेंगे. इन्फ्लामेशन की जो सीरीज में वीडियो बनाने वाला हूं उसमें. Today, as far as this video is concerned, we will talk about introduction, उसका introduction और उसके types. बाकी जो आगे वीडियो बनाने वाला हूं उनमें हम लोग acute inflammation क्या होता है, a detailed mechanism उसकी, और उसके बाद में हम लोग chemical mediator of inflammation और chronic inflammation क्या होता है वो देखेंगे इस सीरीज में. Anyway, today we'll start with the topic inflammation. तो inflammation होता क्या है? If I will go with the book's definition, इसका मतलब होता है inflammation is defined as the local protective response of living tissue to injury due to any agent. Inflammation, a process by which body's immune system malfunctions. अगर हम आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो inflammation, what is inflammation? Inflammation is a protective response of your body. Inflammation एक बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है. किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ टिश्यू इंजरी. किसी भी तरीके की सेलुलर इंजरी या टिश्यू इंजरी हो रही है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है इन्फ्लामेशन. कैसे? इन्फ्लामेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो इंजर्ड साइट पे जाते हैं. आई विश टू एक्सप्लेन यू हाउ इट इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स. यू कैन नो अबाउट दैट योर स्किन क्या है हमारी? इट्स द वन ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑर्गन. यस और नो? इट्स एक्चुअली अ बैरियर. ये एक बैरियर है. कोई भी बैक्टीरिया बहुत इजीली हमारे सिस्टम के अंदर घुस नहीं पाता है बिकॉज ऑफ स्किन. क्यों? क्योंकि स्किन पे आपको पता होगा हमारे यहाँ सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, सीबम कहते हैं, विच सिक्रीट सीबम. सीबम एक तरीके का स्टिकी मटेरियल है, ऑयली मटेरियल है, विच कैन अडेयर द पार्टिकल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया सो दैट इट कैन नॉट इंटर इनटू योर ब्लड और सिस्टमिक सर्कुलेशन. मतलब एक स्टिकी पदार्थ है जिसके ऊपर बैक्टीरिया या और कोई भी ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल अडेयर हो जाते हैं और वो अलाउ नहीं करता कि वो टिश्यू परमेट करके ब्लड में चला जाए. अगर बैक्टीरिया ब्लड में चला जाएगा तो वो मल्टीपल ऑर्गन पे अटैक कर सकता है और इसीलिए स्किन एक तरीके का इम्यून ऑर्गन है हमारे बॉडी का. Now what exactly skin does? Only sebum? No. Skin के ऊपर we used to have a salt perspiration through which it has been there. मतलब हमारे स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं which secrete sweats. वो स्वेट सिक्रीट करते हैं. जब वो स्वेट सिक्रीट करते हैं तो स्वेट का टेस्ट आपने किया होगा. इट इज सॉल्टी इन नेचर विच कंटेन सोडियम क्लोराइड. और आपको बता दूं मैं कि सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी वेरी गुड एंटीसेप्टिक एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी. जब भी टिश्यू इंजरी होती है तो एक्चुअली स्किन में एब्रप्शन होता है या स्किन फट जाती है. यस और नो? So it will give easy pass to bacteria to enter into your systemic circulation. अगर skin नहीं रहेगी तो bacteria can easily attack, easily enter into your blood circulation. Yes, it is possible. इसी वजह से inflammation की process होती है. Inflammation करता क्या है? It's simple. जो आपके blood vessels हैं उसको dilate कर देता है. जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे तो जो ब्लड वेसल के अंदर इपिथेलियल सेल लाइनिंग है इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा.
जस्ट इमेजिन, मैं आपको बताता हूँ, कंसीडर ये मेरा पाम जो है वो वन एपिथेलियल सेल है जिससे जो ब्लड के ऊपर है. दिस इज व्हाट अनदर. नॉर्मली इट यूज टू बी लाइक दिस, बट व्हेन इन्फ्लामेशन इज देयर उसको डायलेट होना होगा, तो देयर इज इंक्रीज इन द गैप बिटवीन द टू सेल. दो सेल्स के बीच में गैप बढ़ जाएगी. गैप बढ़ जाएगी तो बहुत आसानी से WBC यहां से निकल के यहां चले जाएंगे. एंड वेयर इट एग्जैक्टली हैपन्स? एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन. कहाँ पे होता है ये? जहां पे टिश्यू इंजरी होती है वहां पे. ये टिश्यू इंजरी किसी भी तरीके की हो, इट्स नॉट समथिंग इन्फ्लामेशन किसी स्पेसिफिक इंजरी के अगेंस्ट में होगा. एट एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी, if body gives its a protective response, it will always be in the sense of inflammation. I hope you understand. अब इन्फ्लामेशन किस किस कंडीशंस में होता है? आपने सुना होगा डायबिटीज, अर्थराइटिस, मिस्थेनिया ग्रेविस, ये सारी डिसीजेस है, एंड मेनी मोर डिसीजेस जहां पे आपको इन्फ्लामेशन मिलेगा. नेक्स्ट स्लाइड है इटियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन. उसका मतलब व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन, क्या क्या रीजंस होते हैं वी डू हैव एन इन्फ्लामेशन. इफ यू विल सी माय चैनल यू विल एबल टू ऑब्जर्व दैट ये जो इन्फ्लामेशन है ये सेलुलर इंजरी की वजह से हो रहा है, एज आई टोल्ड यू इन डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन. So if you will observe about it, the causes will be almost similar as that of cellular injury. But still, etiology of inflammation क्या है या किस वजह से inflammation होता है? तो the first and foremost is exogenous causes. कुछ बाहर के causes अगर हो उसके वजह से, या तो फिर अंदर के causes होंगे बॉडी के अंदर के, that has been called as endogenous causes. If you will see about the inflammation causes, exogenous causes, the first and foremost is physical agent. मतलब physically कुछ चीजें इंजरी कर रही है तो you can see over here on the slide. फिजिकल एजेंट्स भी दो कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग. एक तो मैकेनिक एजेंट, लाइक जैसे कि फ्रैक्चर्स हो गया, जैसे कि फॉरेन क्रॉप्स की वजह से होता है एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे कि सैंड की वजह से इंजरी होती है, अब्रप्शन हो सकता है, या तो फिर थर्मल एजेंट्स जो कि बर्न कॉज करते हैं, एंड फ्रीजिंग. बोथ द कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में सेलुलर इंजरी होती है, चाहे स्किन जल जाए या सेल are burned or they are been freezed. In both the condition it result into cellular injury. If you wish to know freezing से cellular injury होती है, then you can see about the cold wound healing. Cold wounds you will get to know about कि freezing से भी inflammation या cellular injury होती है which result into inflammation. Chemical agents, toxic gases, you know about it. Toxic gases result into asthma, and asthma is a hyper responsiveness causing chronic bronchitis also because of these toxic gases. And India में तो बहुत ज़्यादा है. You can see about the acids, you can see about the bases. These all आपको पता होगा हमारे सेल या टिश्यू are being more alive at a neutral pH. At any sort of reason अगर वो एसिड ज्यादा हो जाए या बेस ज्यादा हो जाए तो your cell will not able to alive, cell alive नहीं रह पाएंगे and they will result into damage. Biological agents भी inflammation cause करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, viruses and parasite. Bacteria, viruses and parasite all result into inflammation. आपको पता होगा tuberculosis is a disease of lungs, but does it is for lungs? No, it can be occur to any of the organ of your body. कहीं भी हो सकता है, right from your brain, which we used to call it as a meningitis. It will be there to the GI tract tuberculosis is there. But exactly tuberculosis की अगर आप definition देखोगे, it's just a granular inflammation. If you will see about the bacteria से देखना हो तो tuberculosis is a good example. If you talk about viruses, you can see number of diseases.
where viruses can cause an inflammation, and so with the parasites. So जितने भी biological agents हैं, जितने भी micro organisms है, they will attack on your body. They are having endotoxin and exotoxin, और उसके वजह से cellular injury होती है. इंडोजीनियस जैसे सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, या सपोज करो कि पर्टिकुलर सेल इज नॉट गेटिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इस्चेमिया. आई टोल्ड यू व्हाट इज, आई टॉट यू इस्चेमिया. If you will see my video on cellular injury, you will come to know about this. So if hypoxia condition रहेगी तो सेल को बहुत दिनों तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, and that result into infraction, which you will commonly observe with the myocardial infarction. Probably you know about this disease. Enzymatic activation, जरूरत से ज्यादा अगर enzyme activate हो गए, जैसे कि acute pancreatitis, it's been there, and metabolic products, अगर there is a disbalance in that, then also like all of us knows about a disease known as gout. आप सभी को पता होगा gout के बारे में. So if you will see, it's actually a purine metabolic disorder जिसके अंदर uric acid crystal deposit हो जाते हैं joint में, which result into inflammation of joint. So these are what the different example of etiology of endogenous and inflammation with the endogenous and exogenous causes. Next is classical symptom. ये classical symptom मतलब whenever you will find any disease, you will surely observe these symptoms. Like जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज मिलेटस, so you will observe that the classical symptoms is polyuria, polyphasia and polydipsia. Means excessive urination, excessive hunger, excessive thirst. In the similar manner, if you will talk about inflammation, inflammation के 4 classical symptoms है. If I will say 5 classical symptoms है. First is rubor. You can see over here. This is what you are able to see, rubor. Okay, this is what the redness over there. लाल कलर हो जाएगा. Why this red color is there? Suppose यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर एपिथेलियल सेल लाइनिंग के बीच में गैप बढ़ जाएगा, so that WBC can come outside. तो हम सबने पढ़ा है WBC are having a larger size, RBC are having a smaller size. So don't you think with the WBC, RBC can also come over there? Yes. So RBCs are of red color, and that's why जब भी inflammation हम लोगों को होता है, it shows a red color. अच्छा, सिर्फ WBC और RBC आएगी, with that plasma will also come, and throughout if you will find that the liquid over deposition will be there at that site over the skin and blood vessel. Yes, absolutely, at the site of injury, and that's why you will find tumor. Tumor means swelling. Another one is heat. Heat generation has been higher because जहां भी inflammation होता है वहां inflammatory mediators भी release होते हैं. With that, if you will see about it, वहां पे vasodilation होता है, and vasodilation is one of the reason to create a heat over there. And pain, we are having sensory organ over there, sensory receptors over there, which are get activated because of inflammatory mediators, and that's why pain वहां पे होगा, pain होगा जहां पे इंजुरी होगी. And last one, मुझे एक बात बताइए, इफ यू विल सी कहीं भी आपके बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो डज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली? You will observe that no, it will not function properly. And in the similar manner, the 5th sign is known as functiolacia, which means that loss of function. So these are what the 5 classical symptoms that you come across with the inflammation. अगर इन्फ्लामेशन को हम ब्रॉडली टाइप्स में कन्वर्ट करें तो देयर आर 2 टाइप्स. वन इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन, अनदर वन इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन. एक्यूट नाम से ही समझ में आ जाएगा, रैपिड ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन, उसी को कहते हैं एक्यूट. और क्रोनिक मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इंसिडियस ऑनसेट रहती है, ऐसा एकदम से नहीं हो जाता है. इट विल टेक टाइम टू हैव अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन. Acute inflammation reversible होता है, we can treat it very easily. Chronic inflammation is difficult to treat.
एक्यूट में क्या देखोगे आपकी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन एक्सुडेशन, न्यूट्रोफिल भी वहां मिल रहा है आपको। जबकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में यू विल फाइंड lymphocyte, macrophages and plasma cells. This is what the difference between acute and chronic inflammation. Chronic inflammation generally been associated and result into number of chronic diseases like cancer, like diabetes, like other diseases. So in the next video, thanks for your patience listening, listeners. In the next video, I will come with the pathogenesis or mechanism of inflammation. Till that, goodbye. Have a good day. Please subscribe my channel.